Okay, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 11 of NLP. So in the last lecture, we were discussing lexical semantics, and we discussed lexical semantics to motivate the need for richer representations for words. And we said that words were the smaller units of representation that we often needed in building NLP applications. So after that, we then introduced the notion of two key concepts. The concept of vectors as representation, which is a richer representation, it contains more than one value. And then we also talked about how to learn these vectors. And we introduced the notion of distributional semantics. And after that, we started talking about the first way of learning the semantics using word context matrices. So we will start from there, talking about word context matrices, which leads to sparse representations for words, but they are vectorial representations and they do capture semantics and syntactic information regarding words, and they are much more richer than simple single valued representations. And then after that, we will talk about dense representations, and more specifically, we talk about the technique called Word2Vec that leads to dense representation. So that would be the agenda for today. Uh, so, so in a way, this topic is important because this kind of changed NLP processing in the last 10 years. And the idea is relatively simple and the concept is simple, but of course, its applications are quite broad. So, are there any questions before I get started more formally? Is my screen visible? All right. Okay. So, so we had started talking about sparse representations for words as a way of representing words in much more richer way, in a richer way that captures deeper meanings about words, which we discussed last time. And it is sparse because, as you'll see, many of the values in this vector would be zero. Most of the values in this vector would be zeros, only a few would be non-zero. So the most common way of building such vectors was what is known as the word context matrix. And word context matrix is, you can say, a specialization of the word document matrix that we had already talked about while we were discussing IR and text classification. Um, In this case, the context is defined more narrowly. So in the previous case, the context was a document. So now we can define the context more narrowly and control that context and then build that matrix. Uh, so, so let me go over this again. So let's say we have a small sentence. Of course, you typically have a large corpus from which you will build this word context matrix. And I'll write just a small sentence and give you an example of how this word context matrix is filled out. So let me take an example. I went to eat at, for example, MCDONALD. ठीक है? So this is a corpus. Of course, the corpus would be much larger. And from the corpus, you get the entire vocabulary. And in this case, so I went to eat, that is 4, at McDonald's, so 6. The vocabulary here would be just 6. Of course, in the real sense, this vocabulary will be much larger, 20,000, 30,000, 100,000. The total number of distinct words that you see in a particular language coming from a particular domain.
So the word context matrix is essentially a word to word matrix. The context is defined by a word. Word matrix defined by a context window. ठीक है? So you take one word as your central word and then you define a context around it. So context previously, as we said, was like a document, but now we are taking each word and taking a context that is around it. So the kind of way the context is flexible now around each word. So usually it is a number of words around that word. So we take that number as C. C could be anything from, so you can say context width on each side of word. So as I said, this can be +1 or higher. So +1 meaning that on one side, -1 on the other side. So in other words, you can just say context window C of size 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7, usually up to maximum at 10, but usually 3, 4, 5 should be sufficient. Okay? So let's take a context window C of is equal to 2 for an example that we have shown above. Okay? So we'll take each word in the vocabulary as the central word, and then we'll look at all the words that appear in its context as defined by this C. Okay? So let's say if I take all the words that we have is I, for example, went to eat at MC Donald's. Okay? And generally this matrix would also have, the context would also be the same vocabulary. ठीक है? So the context जो उसके जो columns होंगे वो भी same होंगे. So let me write those as well. So one, I went to eat at MC Donald's. Of course, this is a very small corpus. As I said, just for illustration purposes, usually this would be 20,000, 30,000, 40,000. So matrix would be 40,000 by 40,000. Huge matrix. Okay? So now we will look at the context and count the number of times that a word appears given its context. So the row is the word, ठीक है? और उसका context में I है. So of course in this small corpus I occurs once. ठीक है? वो exactly the same place. ठीक है? So what about went? So C plus C2 means that we are taking a window of 2 after the word and 2 before the word. तो इसका मतलब went भी आएगा इसके अंदर. ठीक है? तो उसके बाद 2 भी आएगा. Eat and then eat कोई नहीं होगा. And then at भी नहीं होगा. McDonald भी नहीं होगा. ठीक है? So what about went? Went में of course I होगा 1 because it's on the left side one word. 2 words हम ले रहे हैं. ठीक है? Itself भी होगा, went भी होगा. So to भी होगा और eat भी होगा. At और McDonald 0 है. Went to eat at McDonald. ठीक है? So what about eat? Okay, 2. So 2 में क्या होगा? So I का 1 होगा, went का 1 होगा, 2 का 1 होगा, eat का 1 होगा, at का 1 होगा, McDonald 0 होगा. So eat का ऑफ कोर्स ये I निकल जाएगा बाहर अब कॉन्टेक्स्ट विंडो से. ठीक है? went आएगा, 2 आएगा, eat आएगा, at आएगा, McDonald and so on. So of course this is for just one sentence. You do this for the entire corpus. A corpus means like you have millions of words.
और आपके पास now you will know that which word appears in the context of others, and this would capture the co-occurrence of words in natural language as written by authors, as given in your corpus. ठीक है? So in a way, this is capturing your distributional semantics. So we know which word appears more frequently in the context of other words. So one row represents a word and the columns represent the context. So you can think of one row as a representation for a particular word. The context words represent its features. ठीक है? So context word represent its features. So each word now, a row word, row vector is a representation for that particular word, and the number of features would be the columns, which would also be equal to the total number of words in the vocabulary, and the values would represent how that word is represented in that feature space. Okay? Of course, since as I said, this was a small example, if you have a huge corpus, तो आपके पास huge corpus है, तो उसमें for example, let me take two words. So cherry एक fruit है. By the way, cherry गाड़ी भी है. Double R के साथ cherry fruit है. ठीक है? So let's say this is my actual word. Or let me say context word मैं लेता हूँ digital. So would you likely find cherry close to the word digital, even if you take a large corpus? So it's unlikely. ठीक है? But let's say इसी तरह cherry and दूसरा word let's say pie है. Are you likely going to find pie written close to cherry in a large corpus of writing of English or any other language for that matter if you are using a different language? So this count would likely be much larger, right? So this count, which is, as I said, the co-occurrence count, is capturing the semantics of how words co-occur in natural language. ठीक है? Let me just show you a couple of slides from the slide. By the way, I've already shared the slides for this. The whole slide that I've shared is part of your reading, and we have covered most of that stuff. We will cover most of the stuff. So we have already talked about this. We wanted to define meanings as vectors, and then we fill those vectors by distributional semantics. So this is a snapshot from a word context matrix that are developed from a large corpus. Of course, snapshot because we cannot show all the words. Obviously, the total number of words in the vocabulary will be very large, but this is some selection of actual words and some selection of context words. So actual words may, for example, cherry, pie, uh, I think digital and information है, और context word में आपके पास data है, computer है, and so on. ठीक है? And you see the counts that you have seen for these words and their respective context in a large corpus. ठीक है? For a specific context एक matrix बनता है. Context C जो window आप change कर देंगे तो of course these counts would change accordingly. And we will see later on कि इस C का impact क्या होता है. C बड़ा करेंगे तो क्या होगा, C छोटा करेंगे तो क्या होगा. ठीक है?
Uh, this is actually showing the plot of two words, digital and information, with two features only. Remember, feature space would be the entire vocabulary, but सिर्फ दो features का दिखाया हुआ है, data I think on the x-axis और computer on the y-axis. तो these are 2 points. डिजिटल भी एक पॉइंट है, इंफॉर्मेशन भी एक पॉइंट है, और उसकी जो वैल्यू फॉर डेटा और उसकी वैल्यू फॉर कंप्यूटर आपके पास आ रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स डेटा और कंप्यूटर आर जस्ट टू फीचर्स 2D स्पेस में शो करने के लिए। ऑफ कोर्स द स्पेस वुड as big as the vocabulary size. But if you are able to visualize such a space, फिर भी ये दो डिजिटल और इंफॉर्मेशन के जो वेक्टर्स होंगे, इट विल बी लाइक दीज वेक्टर, वो एक पॉइंट्स होंगे इन दो स्पेस, और पॉइंट्स, दैट्स व्हाट वी मेंट बाय एम्बेडिंग्स, दीज आर एम्बेडिंग्स, so words are embedded in space. ठीक है, so any questions? So as you can see from this example, there मैंने अभी जो example दी है, so cherry and computer obviously digital, so the digital की value most likely zero होगी. So this, as I said, this vector for cherry would be sparse. So cherry की पाई के साथ वैल्यू कोई आ रही होगी, इवन इफ यू टेक अ लार्ज कॉर्पस, पर cherry के डिजिटल के साथ वैल्यू जीरो होगी, and there will be many such words like digital, maybe let's say even you can take medical words, you can take let's say other nouns, for example, that would not likely co-occur with cherry. So this matrix or this vector for cherry, so vector for cherry and for that matter any other word would be sparse. But still it will capture semantics. And we already know about the cosine similarity, or in other words, we more properly we call it the cosine relatedness. Remember we talked about similarity and relatedness before, last lecture में. So relatedness is a much broader concept, and that is the one that we will use whenever we apply the cosine measure. So the cosine can then be found between any two words. So for example, cherry, cherry का vector है, and let's say apple, let's say का vector है. And similarly, if you find the cosine for cherry and digital, the first cosine would be much larger than the second cosine, because those two vectors would overlap in a greater way. ठीक है, cherry और digital का vector less overlap करेगा as compared to cherry and apple, because they are related. And if you think in terms of embeddings, तो cherry का जो point होगा वो digital से दूर होगा, और apple का point cherry के करीब होगा. ठीक है, of course this is in vocabulary sized feature space. So in many applications, we would want to compare words. And of course, words are building blocks for larger units like documents. So if we had richer representations for words, then we can do much more detailed analysis of uh, depending on the task that we have. So in a very basic sense, let's say your task is just to distinguish whether two words belong to one semantic field or not. So obviously a cosine similarity between the vectors would help you do that. So apple and pie would be related, would have a higher cosine, because they typically refer to a semantic field that is related to, let's say, farming, that is related to fruit, for example, while apple, cherry, and digital would not have a high cosine similarity. So again, applications broad हो सकती हैं. So if you simply want to find relatedness based on various जो हमने रिलेशनशिप डिसाइड की थी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. पर आगे जाके हम देखेंगे इसको हम बिल्ड अप करेंगे.
You can use these representations for broader applications. Okay, one final thing before I move on to the Word2Vec thing. So far, I have built this matrix, word context matrix, using raw counts. Okay? So raw counts are fine, but in practice, people have found that you should use some other measures. Uh, so I briefly mentioned one measure. Of course, वो slide में अब नहीं है, निकाल दी गई है, but I think it's still useful. So I'll just show you the formula. This is called the positive. Sorry. हाँ ठीक है. Point wise mutual information. So which is PPMI. ठीक है? So I write the formula and you can always compute this and use this as the number for any co-occurrence rather than just a count. So PPMI of two of a word W and a context C. ठीक है? A word W and a context C is basically max of 0 and the formula. So let me write the formula. So log can be base 2 or log 10, but whatever you use it consistently. ठीक है? So numerator में probability of the joint, ठीक है? और denominator में probability of the individual words. In other words, ये आपका independence mutual information भी कहते हैं, but you can use this to find independence relationships as well. ठीक है? So numerator में probability of the joint probability of the word and the context, ठीक है, which is coming directly from your word context matrix. Or denominator में the probability of each of the words separately, the word and the context. ठीक है? So if these two words are independent, of course this would be equal to 1, right? The joint probability is equal to the individual probabilities. And if this is equal to 1, this will give you a value of 0. Okay? So 0 value means that if you know a particular word W, you cannot tell whether a particular word C would occur next to it or not. So in other words, they are independent, almost random. आएगा भी नहीं आएगा. But so that would be 0. But if it is non-zero, it means that they are related, meaning that जब W आएगा, C is more likely or less likely to occur. But जो less likely वाला negative जो value आएगी उसको हम discard कर देते हैं, उसको हम 0 ही ले लेते हैं. Remember, I did a max here. Or simply retain the positive values. ठीक है? So this is the positive point-wide mutual information. So log जो मैंने लिखा है वो PMI है. हमने यहाँ positive PMI यूज किया. So negative value discard कर दिया. In other words, negative value 0 कर दिया. So instead of the vectors of counts, you can use the vectors of PPMI. ठीक है? और ये जो probabilities किस तरह निकालते हैं, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर और सो हम स्टार्ट करेंगे एनग्राम मॉडलिंग, तो वहां से आपको पता चल जाएगा एस्टिमेट किस तरह करना है. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट राइट नाउ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर पे जॉइंट है, डिनोमिनेटर में सेपरेटली है. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है. All right. So now let's move on to dense representations. So in the previous representations, the vector size was vocabulary size, and vocabulary size can be anywhere from 30,000 to even 500,000. So those vectors are huge.
And of course, there are many values within those vectors, or much values, most values within those vectors will be 0. So dense vectors are those in which the fraction of zeros is very small. Most values are filled. So these dense vectors are smaller in size as well, smaller in length, and as they're also dense. So mother few zeros. Okay? So both of these uh, have benefits. So smaller size का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर में मेमोरी कम यूज करनी पड़ेगी फॉर ईच वर्ड कंप्यूटेशन आपका तेज होगी एंड आल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग you will need to learn fewer parameters but usually each vector के साथ एक parameter associated होता है if you think in terms of neural networks each value के साथ एक parameter होता है if your value is the vector size is smaller then you will have to learn fewer parameters so all of this are benefits of dense representations and also if you have learned this dense representation in a much more sophisticated way it will be able to capture more information regarding those words. So which is the one that we are going to discuss next. Okay. So we are going to discuss one specific way of learning this dense representation, which is called the Word2Vec. So this was proposed in 2013, uh, introduced in 2013. The idea was around for, I think, a decade or so before, but these guys in 2013 from Google, they proposed an approach that was much faster and reliable. Okay? And then, of course, after 2013, they became universally used for NLP processing. And of course, there are other variations as well. वो हम detail में discuss नहीं कर पाएंगे. I'll talk about them briefly after I've covered this. Okay? Okay. So the sparse representation that we discussed earlier were based on word context matrices, or you can say co-occurrence matrices. Okay? Here, and so those representations were based on co-occurrence. Here also we will use the notion of co-occurrence, but in an indirect way. So actually, what we are actually going to do is we are going to build a prediction model. So build a classifier and use the parameters of those classifiers as representations. Okay? So let me explain this in a bit more detail. So remember, we had already talked about feed-forward neural networks in the previous classes. So that was one of the reasons that I covered feed-forward neural network previously. Book में ये थोड़ा सा उल्टा है, तो they discussed Word2Vec in the context of logistic regression only, which is a bit more confusing. Neural networks में ये ज़्यादा easily understandable है. So a feed-forward neural network, so you have an input layer, you have a hidden layer, and you have an output layer. Okay? So this is a two-layer feed-forward neural network. Remember, input layer को हम count नहीं करते in the sizing of a neural network. The hidden layer, if you recall, we mentioned that this was a representation of the input in feature space. So this is the key aspect. So this layer this is the layer that from which we'll be able to extract the embeddings. And our classification problem is actually a word prediction problem. So multi-class classification problem. How many number of classes? So in other words, word prediction problem. So number of classes is equal to vocab space size. So it's a multi-class classification problem and the output number of classes is vocab size. Vocab size usually बहुत बड़ा होता है, right? 20,000, 30,000, 100,000.
But that, as we will see, is not a major issue as long as we have a large corpus to train it. So we have an input layer, we have a hidden layer, and we have an output layer. So first let's talk about the input. Okay, first let me describe what we want to classify. Okay? So when Word2Vec was originally proposed, they proposed two slightly different ways of running this. One was called the skipgram. These names are slightly not very intuitive, but if you go deeper, you will find why they had named this, but we won't go into that. This was the skipgram. One was the skipgram approach. The other was continuous bag of words, जिसको हम cbow भी कहते हैं. skipgram हो गया SG and C. तो मतलब दो अप्रोचेज दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा बस एक वो अप्रोच है. सो वी विल फोकस प्राइमरली ऑन द skipgram और आपको फिर बाद में बता दूंगा cbow क्या करता है. सो skipgram में क्या होता है? सो skipgram में बेसिकली वी प्रिडिक्ट द context word given a target, given a central word. कंसेप्ट वही है co-occurrence वाला और विंडो वाला, बट नाउ वी आर कन्वर्टेड इनटू ए प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है. सो लेट मी go back to the example I wrote earlier. I went to eat at MC Donald's. ठीक है. And let's say again मैं C is equal to 2 ले लेता हूँ. Context window is 2. ठीक है. So अब input output pairs मेरी क्लासिफिकेशन के क्या होंगे गिवन द स्मॉल ट्रेनिंग डेटा सेट. ठीक है. एक तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, आई का इनपुट है तो हम आई ही आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज काइंड ऑफ ट्रिवियल. कॉन्टेक्स्ट आई का कॉन्टेक्स्ट आई ही है, आई है तो वेंट है. ठीक है. आई है तो टू है. ठीक है. एंड देन इफ यू टेक द सेकंड वर्ड विच इज आई वेंट, वेंट का कॉन्टेक्स्ट वर्ड एक पिछला वाला भी है, आई है. वेंट का कॉन्टेक्स्ट वर्ड वेंट भी है, लेट्स राइट दैट. वेंट का कॉन्टेक्स्ट वर्ड टू भी है एंड वेंट का कॉन्टेक्स्ट वर्ड ईट भी है. ठीक है. एंड सो ऑन. वेन टू का करें, टू का कॉन्टेक्स्ट वर्ड आई भी है, टू का कॉन्टेक्स्ट वेंट भी है, टू का कॉन्टेक्स्ट टू भी है ऑफ कोर्स, टू का कॉन्टेक्स्ट वेन टू ईट है और टू का कॉन्टेक्स्ट MC डोनल्ड्स भी है. सो ये आपके पास इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स आ गई हैं कि लेट्स से मैंने आपको मॉडल को आई दिया, इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट the C is the context window size. This C is not the context word, this is a context window size. It means that कि given a central word, context window के कितने words पहले लेने हैं, कितने words बाद में लेने हैं. So when C is equal to 2, it means that we are considering two words after that word and two words before that word as being the context for that particular word. ठीक है. So that's how I have written this input output pairs. So if you look at vent for example, लेफ्ट साइड पे वेंट देखें आप, वेंट का लेफ्ट साइड पे आई भी है, टू भी है, तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं. वेंट के राइट साइड पे ईट भी है, एट भी है, वो उसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं. टू एट भी है. वेंट टू ईट, सॉरी ईट है, सॉरी.
सो दीज आर फॉर वेंट, ठीक है ना। वेंट के पीछे आई है, वेंट के बाद टू है और वेंट के बाद ईट है। तो ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं वेंट के। ऑफ कोर्स इफ यू हैव रनिंग टेक्स्ट तो आई से पहले भी कुछ हो सकता था, बट सिंस आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, किसके लिए, सर लास्ट में टू के साथ एट आएगा मैकडोनल्ड्स की जगह। टू के साथ, जी, लास्ट में। ठीक है। टू 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 ईट, हाँ एट आएगा, ठीक है। पहले एट आता फिर मैकडोनल्ड आता, ठीक है। सो इस तरह का आपके पास ट्रेनिंग डेटा, सो दिस इज लाइक ए ट्रेनिंग डेटा। सो रिमेंबर, classification problem is a supervised classification problem. By the way, classification is supervised learning problem. तो you need labels, input output pairs चाहिए होते हैं, ठीक है। But in this particular case, in this particular application, you don't need any external labels. Labels are not required, or human annotation is not required. So labels are available in our running test. So as such, this is called self-supervision. So you might have heard of this name, or self-supervised learning. ठीक है। जैसे यूजली लेट्स से हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी थी, हमारे पास एक ट्वीट थी, ट्वीट का हमने पॉजिटिव या नेगेटिव कहना था, या ट्वीट का हमने जेंडर देखना था, तो समवन वुड कम एंड टेल अस कि ये जेंडर इसका मेल है, ये जेंडर इसका फीमेल है। यहाँ वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज, ठीक है। सो the supervision data or information is already available in our data. So that's why this is called self-supervision. You will see this term used quite frequently in NLP. Of course, other domains में ये कम use होता है, but this is just to distinguish that this supervised problem is not difficult. कोई हमको external labeling करने की जरूरत नहीं है, annotation करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर labels available है, ठीक है। So now we have talked about input outputs as words. अब representation क्या होगी उसकी, ठीक है। सो रिमेंबर, हमारा ये होल एक्सरसाइज हम करना चाह रहे थे, वी वांटेड टू लर्न रिप्रेजेंटेशंस फॉर वर्ड्स, बट वी नीड टू स्टार्ट विद समथिंग, राइट। हमने आई को कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है, वेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, मैकडोनल्ड को कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स वी वांट टू लर्न रिचर रिप्रेजेंटेशन, तो वो फिर हम अपडेट कर लेंगे थ्रू द फीचर स्पेस। सो स्टार्ट में फिर हम वी बेसिकली यूज व्हाट्स नोन एज द वन हॉट एन्कोडिंग, meaning that huge vectors with just one at the place where that word appears. So let's say vocab size, again, just take an example, let's say is 20,000, 1, 2, 3. So you will have vectors of length 20,000 representing each word, okay? And you will have some specific ordering for these elements in the vector. And so when a particular word occurs, then you will have a vector with just one in the vector and all other zeros, ठीक है। सो लेट्स से मैंने आई को रिप्रेजेंट करना, आई, एंड लेट्स से आई की पोजीशन, अगेन जस्ट फॉर एग्जांपल से सेकंड पोजीशन पे, तो 0 1 0 0, सारे बाकी सारे जीरो होंगे। सो दिस वुड बी फॉर आई। लेट्स से मैंने ईट को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से ईट का
पोजीशन लेट्स से 600 पे ईट की पोजीशन है, तो यू विल हैव ऑल जीरोस जीरोस जीरोस। जो 600 की पोजीशन है वो 1 होगी, फिर जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, तो these are called one hot encodings, meaning that you are representing each word with a vector of constant length, which is 20,000 in this case, but with just one value, the rest are zero. और वो one वैल्यू वही है जो जिस पोजीशन पे आपने उस वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, एंड दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, सो जो मैंने ऊपर इनपुट, सो ये जो वेक्टर्स थे, इनपुट आउटपुट वेक्टर्स, अब सारे ये उस तरह रिप्रेजेंट होंगे एज वन हॉट encodings. So now you have vectors for these uh, words. We don't have just word, but now you have vectors which are numbers, and of course neural networks can process numbers. ठीक है, okay. So now let's look at the neural network. So neural network में हमने लास्ट टाइम नोटेशन डिस्कस की थी, राइट? सो इनपुट x होता है, yes, so each word would have just one in it. All the other values would be zero, and the length of the vector would be equal to the vocabulary size, and I took an example of 20,000. ठीक है, so x is an input, which we said can also be written as a superscript in square brackets 0. Remember notation याद है आपको? ये vectors हैं, ये bold है, ये ठीक है, vocabulary size. तो ये इनपुट आपके पास फिर इतनी होगी। अब जो हिडन लेयर है, बाय द वे, again using the notation that we used before, this is going to be n0. ठीक है, now the size of the input. So what would be n1 be? This is the size of the hidden layer, and this is the size that we need to specify as the size of the dense vector. So usually this would vary from, of course, application dependent and computational expense dependent, usually vary from around 50 to about 1000. ठीक है, typical values are 300 and 500, 200, 300, 500. ठीक है, and then n2, which is the output layer, इसका क्या साइज होगा? कैन एनीवन क्विकली टेल मी कि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसका साइज क्या होगा? आउटपुट लेयर, कितने हमारे पास आउटपुट पॉसिबिलिटीज हैं या लेबल्स हैं? So this is also equal to the vocabulary size, right? So what we are doing, input आपके पास word है, output भी एक word है. इनपुट कोई भी वर्ड हो सकता है वोकैबुलरी साइज में, आउटपुट भी कोई भी वर्ड हो सकता है वोकैबुलरी साइज में। तो आउटपुट की पॉसिबल लेबल्स वुड आल्सो बी इक्वल टू द वोकैबुलरी साइज। ठीक है, सो इनपुट का साइज भी और आउटपुट का साइज भी सेम है इन दिस केस।
So actually this is a special case of a neural network which we can also call the encoder decoder network, although ये हम थोड़ा सा बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, but these networks can also be called as encoder decoder. पहला part encode कर रहा है, दूसरा decode कर रहा है. But right now you can think of this as just a multi-class classification problem. Input पे आपके पास size, vocabulary size है, output के number of classes is also equal to vocabulary size. और hidden layer आपने खुद ही specify की है, which is usually, as I said, 300, 500 and so on. ठीक है? So we already know the equation for such networks. So input to hidden layer to output layer. ठीक है? Uh, so we discussed this last time. So let me write the general equation and then I'll talk about the two parameter matrices. So general equation is that, let's say, uh, okay. So A, I, ठीक है? So A of course 1 and 2, दो options है हमारे पास, ठीक है? A0 is of course the input. So this is equal to, for the first layer of course this is going to be, वही मैं सोच रहा था, so let me write it separately. इसको 1 ही कर देता हूँ सीधा. So tangent hyperbolic rectified linear unit of W, ठीक है? W1 into your X है, X A0 होता है, ठीक है? मैं X यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस B, ठीक है? A लिख लेता है यहाँ, हाँ नहीं X ठीक है, that's fine, ठीक है? And then after that you have, yeah, ये superscript ही है, या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, यू अज्यूम दिस इज पार्ट ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? ठीक है, तो A2 जो होगा, सॉरी, A2, सो दिस इज आल्सो योर Y प्राइम आउटपुट, राइट? ये नोटेशन हमने यूज की थी. सो दिस इज गोइंग टू बी देयर सॉफ्ट मैक्स ऑफ W2, ठीक है? uh, ये कैपिटल है, मैट्रिक्स है, ऊपर क्या लिखा मैंने, हाँ ठीक है. A जो था हमारा पिछला A क्या था, A1 था, प्लस B. ऑफ कोर्स ये दोनों बी डिफरेंट है, सॉरी इसको भी फिर 2 कर देते हैं, ठीक है? So these are the two equations that govern this feed forward neural network. Input X आपका one hot encoding है, output Y prime is a probability distribution over those one hot encoding after doing the softmax, ठीक है? So remember Y prime जो है ना वो भी vector of size, vocabulary size है, X and is also of vocabulary size. The intermediate A जो A1 है वो size 500 है या 300 है, जो भी आपने फिक्स किया, ठीक है? So you will train this input output pairs and minimize the multi-class cross entropy loss. So minimize to find the parameters W1, W2, B1 and B2, ठीक है? So you can do that, right? Input आपके पास representation है, आउटपुट की क्लास लेबल्स भी हैं आपके पास, डेटा सेट मैंने आपको बता दिया, ट्रेनिंग इनपुट आउटपुट पेयर्स आपके पास हैं, सारे हैं, एंड यू हैव ए ह्यूज कॉर्पस, कोई आपको एक्स्ट्रा लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, पूरे
डेटा के ऊपर आप लर्न कर लें। कोई एक सेंट्रल वर्ड लें, उसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स उसके आउटपुट वर्ड्स होंगे। इसमें एक स्लाइड इशू है जो थोड़ा सा स्लाइटली मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, नेगेटिव सैम्पलिंग वाला। आई विल डिस्कस दैट स्लाइटली, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, लेट मी फिनिश दिस। ठीक है, ओके। सो वंस यू हैव लर्न दिस, यू गेट द फाइनल पैरामीटर्स। फाइनल पैरामीटर्स आई विल से कि डब्ल्यू स्टार हैं। ठीक है, एक तो पहली लेयर के हैं, W1 के हैं, और डब्ल्यू स्टार दूसरे लेयर के भी हैं। ठीक है, इनका साइज क्या होगा? कैन समवन टेल मी? डब्ल्यू स्टार, ऑफ कोर्स W1 का भी वही होगा। इसका साइज क्या होगा? वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट टाइम। हिडन लेयर N1 बाय इनपुट लेयर N0। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लेट्स से 500 बाय इनपुट लेयर वेक्टर vocabulary। ठीक है, सो हमारी हिडन लेयर की साइज लेट्स से मैंने 500 रखी है। इनपुट स्पेस की साइज ऑफ कोर्स वही vocabulary साइज है। ठीक है, so when this matrix is multiplied with x का size भी vocabulary size है, you get one value which is a that comes out of the hidden layer. But remember this w's would be updated. ठीक है, so when you talk about a particular word, so you get a final w. So let's say when we talk about a particular word, let's say eat की मैंने बात की थी पहले, वो 600 sorry 600th position had a 1, rest were zeros। ठीक है, ईट का वेक्टर W1 इंटू एक्स में मल्टीप्लाई करूं, what would happen? 1 appears at the 600 position of this vector. If you multiply W with this vector x, what would happen? पूरा ये चलेगा, जो 600 जो इसका कॉलम होगा मैट्रिक्स का, वो सारा रिटर्न हो जाएगा, राइट? द 600th कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स W। ठीक है, this matrix vector multiplication will return the 600th column of this matrix W, because 600 position पे 1 था, बाकी सारे zeros थे। So actually this now 600 column जो है ना, this is actually now a representation for this word eat। तो यही information आगे जा रही है न्यूरल नेटवर्क में। So the 600 column vector of W1 is a dense representation for word eat। So in other words, जो आपका मैट्रिक्स W है, W1 है, उसके सारे कॉलम्स आर नाउ द डेंस रिप्रेजेंटेशंस फॉर ऑल द वर्ड्स इन द वोकैबुलरी। रिमेंबर इसमें कितने कॉलम्स थे? उसमें वोकैबुलरी, नंबर ऑफ वोकैबुलरी के साइज कॉलम थे। फर्स्ट vector is the vector for the first word in the vocabulary, the first position. The second is the second vector for the second, is the vector for the second word in the position in the vocabulary and so on। तो आपके पास ये सारी रिप्रेजेंटेशंस आ गई एज captured by this problem of input to output and by the parameters W। So this actually also highlights another important thing. Remember हमने problem solve की word prediction की, but हमने word prediction की problem को as such use नहीं किया, उसके सिर्फ vectors ले लिए for representation purposes। ठीक है, and then we can use this for later on use।
ठीक है. So let me just summarize again. So you have a huge corpus of a language. ठीक है. You have a huge corpus of language. You define or specify a context window size. C is equal to 1, 2, 3, 4, whatever. ठीक है. Once you have done that, you can find input output pairs. जो आपका सेंट्रल वर्ड है वो आपका इनपुट है, और उसके इर्द गिर्द जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं जो हमने प्रिडिक्ट करना है. सो गिवन लेट्स से ए गिवन वर्ड, मैंने उसके इर्द गिर्द वाले वर्ड प्रिडिक्ट करने हैं. ठीक है. इफ ए वर्ड वाज मोर लाइकली टू अकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी प्रिडिक्शन में, अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी लो होगी. रिमेंबर मैंने वो आपको पहले को अकरेंस में एग्जांपल दी थी. चेरी इनपुट होगी और डिजिटल आउटपुट होगा. Are you going to find digital as a context word of the word cherry? Unlikely. So when you learn this from your data, then this prediction probability for digital would be very low. While on the other hand, जब cherry होगा आपके पास, cherry के साथ पाई की probability high होगी. ठीक है. But again, we don't look at the final problem solution, or we can use in some application of course, but यहाँ हमारा गोल था कि अब इसको लर्न तो कर लिया, बट इसकी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है पैरामीटर्स की, वो हमने लेटर ऑन यूज करनी है. वो क्या थी, वो हमने W से निकाली. ठीक है. एंड ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, कैन यू स्टिल हियर मी? ठीक है. ओके. A couple of more things before we move on. एक तो मैंने कहा कि आप ये वेक्टर W1 से निकाल सकते हैं. So W1 was the vector for the encoder. Remember मैंने कहा कि ये this is a special kind of multi-class classification neural network where the first part is the encoder, the second part is a decoder. ठीक है. The second part का जो parameters है W2. ठीक है. So these are the parameters for the decoder. So actually you will get a similar representation in W2 for each word as you got in W1. ठीक है. Of course W2 का dimensions according to our equation slightly different हैं. तो आपने उसको okay. So W1 and W2 are dense representations because of course you once you referred to alluded to already that they are smaller. Yes, they are compact, so large amount of information is given in much smaller sizes, but also because of the neural network nature. Remember neural network में सारी values sum होके goes through a sigmoid function. Sigmoid function squashes it, or some sigmoid function, tangent hyperbolic या inverse rectified linear unit, is gives you values in a smaller range after normalization. Of course rectified linear unit के बाद normalization भी करनी पड़ती है. ठीक है. अब जब स्मॉलर रेंज में आप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि एवरी because all of them are being summing out, so you are not going to get any zeros there. ठीक है. हर वैल्यू, इवन इफ देयर वाज zeros बिफोर, वो सारे आगे आके सम होके हर वैल्यू में कोई वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव. इफ यू आर यूजिंग टेंजेंट हाइपरबोलिक, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कोई आ जाएगी उसमें. So they are not going to be zeros. And so that's the, you can say, the mathematical yeah, the uh, equation perspective view of why there are few zeros. बट जो इंफॉर्मेशन थोरेटिक परस्पेक्टिव यही है जो आपने पहले कहा है कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस की इंफॉर्मेशन स्मॉलर स्पेस में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी रिचर
and you are going to get fewer zeros there. ठीक है. अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपकी W1 की हमारे पास जो डायमेंशन थी वो फॉर एग्जांपल 500 बाय 20,000 थी, या वोकेबलरी साइज था जो भी. ठीक है. सो W2 का जो साइज होगा वो होगा आउटपुट हमारा 20,000 123 बाय 500. ठीक है. सो नाउ दिस मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ एनालॉगस टू मैट्रिक्स W1. अब यहाँ जो है आपके सारे रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच वर्ड इज नाउ इन द रोज. So the representation at the 600 row is the representation for the word eat in W2, and the representation for the word eat in W1 is the 600 column. ठीक है. तो आपके पास एक्चुअली दो रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं इन दिस वर्ड टू वैक इम्प्लीमेंटेशन. एक पहले एनकोडर से आ रही है, एक डिकोडर से आ रही है. आप कोई भी ले सकते हैं, either one of them. Usually people take W1 only, या they take the average of the both. ठीक है. So take W1 और W2. मोस्ट कॉमनली लोग एक लेनी हो तो पहली वाली लेते हैं मोस्टली लोग, और एवरेज ऑफ बोथ. ठीक है. So these embeddings are also called static embeddings, meaning that once you have learned the embeddings or representation for a particular word, they remain fixed and you can use them in later applications as is. ठीक है. So this is as opposed to context specific embeddings, which we'll talk about later on when we talk about transformers and more particular the BERT transformer. So those would yield context specific embeddings, which basically means that the embeddings would change according to how a word is used in context. In this case, the embedding is fixed. But of course, this fixed embedding also captures how that word is used in a particular language. Remember, we have used the window uh, approach to determine if a word appeared in a context or not. ठीक है. So many people have developed these embeddings and they are freely available on the web. So you can search for embeddings for Urdu, you can search for various embeddings for English, and you can download them from the net and use them in your application. There will be of various sizes. 200 साइज का आपने एम्बेडिंग ढूंढनी है वो भी मिल जाएगी, 300 की मिलनी है वो भी मिल जाएगी, 500 की, 1000 की, उर्दू की भी है. एंड ऑल्सो डोमेन स्पेसिफिक भी मिल जाएंगे आपको. लोगों ने मेडिकल डेटा के लिए सेपरेट ट्रेनिंग की हुई है, लोगों ने लेट्स से लीगल डेटा के लिए सेपरेट ट्रेनिंग की हुई है, एंड ऑफ कोर्स जनरल एम्बेडिंग्स भी लोगों ने ट्रेन की हुई हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर फ्रीली अवेलेबल एंड दिस इज अ वेरी रिच रिसोर्स. हर वर्ड के लिए आपके पास एक रिच रिप्रेजेंटेशन है विच इज रेडिली अवेलेबल. You don't need to go through the whole process of training. Simply download those embeddings or use them through the API to use them in your application. ठीक है. So you can Google search for embeddings. So as maybe your homework, you can search for embeddings uh, for English, which is very common, but maybe for specific domains. So e.g., so legal, medical, etc. And also for languages, let's say for Urdu, let's say maybe I can ask you कि किसी ने पश्तो के लिए डेवलप की हुई कि नहीं की हुई. So maybe you can do this simple Google work and tell me next time कि पश्तो की embeddings available हैं कि नहीं है. उर्दू की तो हैं मुझे पता है, but you can search them up as well. And also कि English की domain specific embeddings कौन सी हैं.
ओके, एक फ्यू चीज़ें भी रहती हैं इसकी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मेरे ख्याल से शायद आज ख़त्म हो जाए, 10 मिनट है मेरे पास। ओके, सो while we are developing the training data, so there is the remember, so we have to give, remember this is a classification problem. जैसे हमने ऊपर कहा था कि आई का हमने context word next था went था, so went is a positive word, so went occurs in the context of I. ठीक है, uh, so so but so this is a positive example, but while we are training a neural net we also need negative examples. Remember कि हमने positive negative दोनों examples देने होते हैं, so we want to also give to the neural network examples in which words, those words that do not appear in I also occur. So हमने अब I का negative examples भी देने हैं. So this is a positive example. So I का negative example, for example, क्या हो सकता है? I के साथ जो let's say in a small context कोई word is almost unlikely to occur. So just to take an example, let's say let's say Lahore ले लें. Although some people might write in shortcut or Lahore may occur next to I. No, I think Lahore is not a good idea. I का example इतना अच्छा नहीं है, but let's say I I के साथ कोई और let's say verb ले लें, let's say I or she, let's say. ठीक है, so this would be a negative example. So you also need to give both positive and negative example to training data. ऊपर जो मैंने example दिखाए थे वो सिर्फ positive थे, उसके साथ negative भी add करने थे आपने, otherwise neural network किस तरह train करेगा? Also need to know कि कौन से examples would not occur in the context of a particular word. ठीक है, but would the number of negative examples be greater or the number of positive examples? Remember vocabulary size बहुत बड़ा है, 30,000, 40,000, 100,000. ठीक है, so negative example बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक particular word के आगे only maybe a few hundred words एक particular context में आएंगे. Negative examples could be in the tens of thousands. So we typically do not select all those negative examples for a particular word. We sample them. We sample negative examples. ठीक है? So do you get this point? So just to give you numbers, so let's say I take a word like uh, I want to just find a more word like anyway. So let's say just so let's say positive example for word like let's say cherry. So maybe you will probably find about let's say 300 positive examples. But negative examples for cherry could be in the data set could be let's say 30,000. But we sample from these 30,000 a few hundred only for training. Sample randomly. ठीक है? So do you get this point? जो आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स है वो तो आप एग्जैक्ट लेंगे, बट हर पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव इन दिस केस लेट्स से 300 बन रहे हैं आपके, नेगेटिव एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, बट उस सारे देने के बजाय यू जस्ट सेलेक्ट ए फ्यू randomly selected and then put it in the data set.
So this is a way of making your model computationally more efficient. अदरवाइज सारे नेगेटिव्स के लिए आप अपना न्यूरल नेटवर्क अपडेट कर रहे होंगे, पॉजिटिव के लिए भी कर रहे होंगे, नेगेटिव के लिए भी कर रहे होंगे, बट नाउ वी विल ओनली अपडेट फॉर सब रैंडमली सेलेक्टेड नेगेटिव एग्जांपल्स. ठीक है. सो दिस अप्रोच, the whole approach, which is the most common in practice nowadays, is called the Word2Vec uh, skipgram with negative sampling. ठीक है. तो basically SGNS. So this is the most common implementation that you will see for Word2Vec, skipgram with negative sampling. So it's computationally efficient. It's something that you need to do just once. And once you have learned this mapping from input to output, you can use the W's to store your vectors for all the words. Of course, for this, you can, to store them efficiently, you can use a vector database, for example. ठीक है. वेक्टर डेटाबेस में सिमिलैरिटी सर्चेस बड़ी आसानी से हो जाती हैं. ठीक है. So finally, of course, there are a few other things वो probably next class में होगा. Finally, I remember I mentioned talked about continuous bag of words. ये दूसरी अप्रोच थी जो ओरिजिनल पेपर में उन्होंने प्रपोज की थी, बट अब ये कॉमनली यूज नहीं होती, स्किप ग्राम ही यूज होती है. इसमें क्या है, इसमें जस्ट द फ्लिप ऑफ इट, वी प्रिडिक्ट द सेंट्रल वर्ड गिवन द कॉन्टेक्स्ट वर्ड. ठीक है. स्किप ग्राम में क्या था, वी प्रिडिक्ट द कॉन्टेक्स्ट वर्ड गिवन द सेंट्रल वर्ड. तो इन अदर वर्ड जो आपका ट्रेनिंग डेटा आप फ्लिप हो गया, आपने कॉन्टेक्स्ट वर्ड इनपुट देना है और जो उसके कॉन्टेक्स्ट का जो सेंटर है वो आपका आउटपुट है. तो दिस वाज कॉल्ड कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स. तो आप इस तरीके से भी उसको लर्न कर सकते हैं, आप स्किप ग्राम से भी कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर मोर और लेस आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं है. कंप्यूटेशनली भी और जो रिजल्ट्स आता है एम्बेडिंग में भी, उसमें भी नोटिसेबली या एप्लीकेशन परस्पेक्टिव वाइज कोई फर्क नहीं आता. So you can just use one of those. नहीं, पॉजिटिव में आप सारे दे देते हैं. ठीक है. सो और वी गिव ऑल पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड वी सैंपल द नेगेटिव वंस. ठीक है. सो हर वर्ड एज एन इनपुट, उसके सारे हम आउटपुट ले लेंगे और हर वर्ड के जो नेगेटिव हैं वो सैंपल कर लेंगे और इस तरह का ट्रेनिंग डेटा सेट बना लेंगे. ठीक है. ऑफ कोर्स इफ यू थिंक ऑफ ए लार्ज कॉर्पस, तो उसमें आई और वेंट फॉर एग्जाम्पल वुड अकर मल्टीपल टाइम्स. आई पहला वर्ड होगा और वेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा. तो रीइंफोर्समेंट भी हम करते रहेंगे पॉजिटिव्स की. ठीक है. सो आई और वेंट फॉर एग्जाम्पल एज ए पेयर माइट अकर मल्टीपल टाइम्स. ऑफ कोर्स दिस कैन अकर मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो एज पार्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग. रिमेंबर, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग मल्टीपल बैचेस करते हैं हम, मल्टीपल वही डेटा सेट पे से चलाते रहते हैं. बट इवन इन ट्रेनिंग डेटा सेट, आई वेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये मल्टीपल दफा आएगा. वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल दफा ट्रेनिंग हो रही होगी उसकी. ठीक है. ऑफ कोर्स नेगेटिव सैंपल्स आपने एक दफा ही फिक्स रखने हैं. ये मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो रहा है. नेक्स्ट क्लास में इसी की थोड़ी सी हमने बिट ऑफ डिस्कशन करनी है. वर्ड टू वेक की जो वेक्टर्स हैं वो क्या हमको बताते हैं और वो उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं. वो आई थिंक जस्ट टेक 10-15 मिनट मोर मिनट्स एंड देन वील मूव ऑन टू लैंग्वेज मॉडलिंग. ठीक है. तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर मी टुडे. एनी क्वेश्चंस? So we already have had two quizzes. हमारा third quiz, by the way, your midterm is on October 27.
ठीक है। सो आज 6th है, तो नेक्स्ट वीक विल बी 13 को हम ले लें क्विज। तो आई थिंक वी विल टेक आवर क्विज ऑन 20th, ठीक है, विच इज द मंडे फॉलोइंग नेक्स्ट मंडे। काइंड ऑफ 3 हफ्ते का फिर मटेरियल होगा आपके पास उस क्विज के लिए। सो आई एम पुशिंग इट फॉरवर्ड बिकॉज के उसका आपकी रिवीजन हो जाएगी फॉर योर एग्जाम एज वेल, मिड टर्म एग्जाम। So is that fine? So we will have our quiz on October 20th in class, and then we will have a midterm on October 27th. और आज आपकी assignment 2 भी release होगी if not already. So it's a bit on late side, but please start working on it as soon as possible. Project की information आपसे release कर दी है. For those interested in discussion, please come and see me or the TLs so that you can choose interesting and doable projects. ठीक है. Also, I think we are more or less on track regarding our schedule on that I have uploaded earlier on. एक आध लेक्चर हम थोड़ा सा स्लो हैं, बट आई थिंक दैट्स फाइन, हमारे पास इतने एंड पे है एक्स्ट्रा टाइम, सो वी आर काइंड ऑफ एट द राइट पेस. So any questions?